तस्य प्रमोदलीनस्य परसमहेश्वरः तस्या आशिकाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः ब्रह्मस्य शिवस्य हरिश्चेन्द्रस्योऽक्षरः परमस्वराट् ओम अतलाय नमः ओम विकलाय नमः ओम सुतलाय नमः ओम तलातलाय नमः ओम रसातलाय नमः ओम महातलाय नमः ओम पातालाय नमः ओम भूर्लोकाय नमः ओम भुवर्लोकाय नमः ओम स्वर्लोकाय नमः ओम महर्लोकाय नमः ओम जनोलोकाय नमः ओम तमोलोकाय नमः ओम सत्यलोकाय नमः ओम चतुर्शगुणाधीश्वराय नमः ओम उत्तरदक्षिणेश्वराय नमः इति विसर्जयेत् इत्यात्मार्चनम् अथ मण्डपार्चनम् ओम यक्षेभ्यो नमः ओम रक्षेभ्यो नमः ओम सरेभ्यो नमः ओम गन्धर्वेभ्यो नमः ओम किन्नरेभ्यो नमः ओम पुण्यकाले महापुण्यशुभतिथौ श्रीवेदविज्ञानमहाविद्यापीठे विराजमानानां श्री श्री गुरूणां तथा आश्रमे आगतानाम् अनागतानां सर्वेषां भक्तजनानां च क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर विजय अभय आयुरारोग्य ऐश्वर्य वृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध फलपुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं श्री सूर्यनमत्यंबिका देवता प्रीत्यर्थं पंचामृताभिषेक पूर्वक यावत् शक्ति ध्यान आवाहनादि षोडश उपचार पूजा आराधनं च करिष्ये धान्यप्रदानमूर्ति प्रार्थनं च करिष्ये ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिस्तिरसादनं वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा अथ कलशार्चनम् कलशं गन्धाक्षरत्नपुष्पैरभ्यर्च्य हस्तेनाच्छाद्य कलशस्य मुखे विष्णु कण्ठे रुद्रसमाश्रिताः मूले तत्रस्थो ब्रह्मा मध्ये मातृगणास्पदाः कुक्षोदसागरा सर्वे सप्तद्वीपावसुन्दराः अत्र गायत्री सावित्री शान्तिपुष्टिकरी तथा आयान्देव पूजार्थं कृतक्षेकारकाः सर्वे समुद्रासहितस्तीर्थानि जलदानदाः गङ्गे च मुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे महाप्रत्यवायात्रमुच्यते सर्वविद्भवति स सर्वविद्भवति य एवं वेद इत्युपनिषत् सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे ओम शांति शांति शांतिः ओम अस्य श्रीरुद्रस्य प्रश्नस्य अघोरश्रुंष्य विश्वे देवास्तु उत्तमाच पृथिवीमा धर्मामाहि गुंसि मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतीं देवेभ्यो वाचमत्यादिकं शुश्रूषेण्यां मनुष्येभ्यस्तं मा देवा अवन्